हेलो, मैं कहाँ भाई आ जाता हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। बस दीजिए वो। हाँ, वो आ रहा है। तो तुम्हारा इसी जा रहा हूँ। तेरे को चाहिए तो मैं छोड़ दे। बोल जाइए। कोई छोड़ दे। हाँ, तो हम भी चले थे उसको कर रहे वो काम कर रहे। हम तो बोल रहे हैं। नहीं मैं कह रही हूँ तू छोड़ दो बाहर आ जाओ बाहर। बैग ले जाओ, बैग इसको दे दिया। एकदम दुश्मन का ओपन हो रहा है। क्या एक ही जना कर रहा है। कौन सा बैग? ये बेटा सामान वाला बिल उसी के अंदर ही है। नहीं तो पापा से बात। I'm sorry. Yeah. Okay. Fuck. I was streaming for a while. Um. Okay. Let's see if everything is working. Camera ulta क्यों है मेरा? Let's see if my stream is live or not. Is it live? I don't know. View channel. Yeah, I am live. Yeah. Hello. 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 View channel. Yeah, I am live. Yeah. Hello. Okay, there's a delay, but I guess that's okay. There will be a delay. Except this, let's just go over with the video settings a little. I just really want to flip it. Mm, Filters, something that has to do with this. The the how do we do that? Not chroma key, obviously not chroma key. Color key is not obviously color key. Yeah, there's no option that I guess. Mm, I'll just leave it. Okay. So, yeah, live stream sharing this is going on. I guess something is going on. Yeah, I'm live. I guess so. So yeah. Oh shit. Okay. But here we are, and this is one of the questions that I was doing before, and I solved it, so I will not be considering. I will not consider talking about that. Let's try solving another problem which I was doing yesterday. That was a 1400 out of 1400 problem, and it's proper for 1 second.
अब आई है, अबे फकिंग आवाज ही बनती तब से। एक सेकंड। यप। मेरी आवाज बहुत देर से बंद थी, एंड आई वॉज सॉल्विंग दिस क्वेश्चन फॉर अ while नाउ। यप। मेरी आवाज बहुत देर से बंद थी। ओके, वी फक्ड अप, इट्स ओके। चलो ठीक है। तो मैं समझाता हूँ कि मैंने सोचा क्या क्या। तो मैंने एडिटोरियल पढ़ा। एडिटोरियल पढ़ी की वजह से एक बात पता चली कि मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। ओके, तो अब जो मैं नया सीखा बताता हूँ। आई और जे आपस में कोरिलेटेड है ही नहीं भाई। क्वेश्चन खत्म। दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी क्वेश्चन, बट ये बात थी, मुझे बस ये मुझे लगा कि जे आई से बड़ा होना ही चाहिए, इसलिए मेरा दिमाग बहुत तेज से खराब हो चुका था। तभी तभी तो दिमाग खराब हो गया था कि भाई अब आई को जे से बड़ा कैसे बनाऊं मैं, अगर आगे की वैल्यू, इसलिए ए ऑफ एन माइनस वन का सारा लॉजिक चल रहा था मतलब से। दैट वाज अ प्रॉब्लम, क्योंकि ए ऑफ एन माइनस वन लॉजिक बनता ही नहीं है कुछ। Okay, now let's start. Let's have a new start. Okay, let's just start with the whiteboard. अगर मिल पाता है तो. Although I don't really like the whiteboard, but it's okay. It works. Or oh yeah, OBS does not take that much energy. I was streaming using Chrome yesterday, and oh my God, that was an experience. Okay, so pen please. Yeah. So la 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 la. Okay, no no no. ठीक है, तब देख। क्या करूँ? या हम्म तो अब जो हमारे पास नया नया जो हमें नॉलेज है वो है कि आई और जे आपस में कोरिलेटेड नहीं है। ठीक है, इनके बीच में कोई आपस में रिलेशन नहीं है, कोई भी सेम वैल्यू हो सकती है, बड़ी छोटी कुछ भी हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम क्या करेंगे, अब हम A1 से लेके A2 टक 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 AN। ठीक है, ये वैल्यूज हमें गिवन है। ऑल्दो आई डोंट रियली लाइक राइटिंग ऑन दिस, ठीक है, तो मैं साथ साथ यहाँ पे लिखता हूँ ताकि मुझे समझ आता रहे। A1 A2 और लेके हमारे पास AN तक वैल्यूज है। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, we can just make an the biggest value possible, और wait, what if एक भी पॉजिटिव वैल्यू, तू क्या कर सकता है, तू जो भी वैल्यू पॉजिटिव है, लाइक ओके, फर्स्टली व्हाट इज द बिगेस्ट, द वैल्यूज आर अराउंड 20, -20 से 20 के बीच है, राइट। तो तू क्या करेगा, पहले काउंट कर ले कितनी पॉजिटिव वैल्यूज है, कितनी पॉजिटिव वैल्यूज है। ठीक है, अगर पॉजिटिव वैल्यू का काउंट ग्रेटर देन वन आता है तो उनमें से जो भी बिगेस्ट वैल्यू है, राइट, मैं उससे काउंट रख लूंगा, जो भी बिगेस्ट वैल्यू है, ठीक है, उसको तू ग्रेटर देन 20 बना ले। लाइक इस मैक्सिमम 5 मूव लग सकते हैं तेरे। अगर तेरी वैल्यू वन भी होती है तो वन, अगर तेरी मैक्सिमम वैल्यू वन आती है, ठीक है, पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू वन आती है, तो उसको क्या मतलब, फिर दूसरे मूव में टू हो जाएगा, तीसरे मूव में चार होएगा, चौथे मूव में आठ होगा, एक दो तीन चार पाँच, 16 16 हो जाएगा, और एक और ले लेगा 32। एक दो तीन चार पाँच, पाँच मूव में 20 से ऊपर तो बना सकते कोई वैल्यू हो। ठीक है, सो हम एक वैल्यू को बहुत बड़ा बना देंगे, 32 बना लिया। अब हम क्या करते हैं, हम एक हर वैल्यू को ले लेते हैं A1 ग्रेटर देन A2। अगर A1 ग्रेटर देन A2 आता है तो A2 को बढ़ा दे, इसी वैल्यू से करके। मैक्सिमम एक या दो बार लगेंगी, ज़्यादा कितने बार लगेंगी, है ना, क्योंकि देख मैक्सिमम दो बार इसलिए लगेंगी क्योंकि अगर वो 20 है तो 20 और 20 प्लस 20 होने में इतना टाइम लग जाता है, बट इट्स ओके, ऐसा कर लेंगे। बट अब आता है दूसरा क्वेश्चन, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है जीरो। ठीक है, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू जीरो आ गई। अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू जीरो आ जाती है तो क्या सीन कर सकते हैं हम, तो हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि भाई हमारा क्वेश्चन तगड़ा हो जाएगा, हम कुछ तगड़ा कर सकें। अगर हमारा पॉजिटिव वैल्यू है ही नहीं, या तो हम सेम लॉजिक कर सकते हैं जो अभी कर रहे हैं, बट ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, वी नीड टू मेक n-1
स्मॉलर देन एन, फर्स्ट ऐसे करना पड़ेगा, उल्टा चलना पड़ेगा, सेम चीज उल्टी करनी पड़ेगी। ये बहुत लाइक मैं समझा नहीं पा रहा क्यों। ये बहुत दिक्कत है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई, बट आई नो, यस आई नो कि भाई लॉजिक तो यही है इसका कि उल्टा चलने से हो जाएगा, बट मैं समझा नहीं, आई डोंट हैव एनी मैथमेटिकल प्रूफ ओवर इट, एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। ओके, सो लेट्स थिंक अबाउट इट। कोई मैथमेटिकली प्रूफ कैसे कर सकता हूँ इसको? सोच, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं कर पाता मैं तो। ओके, तो ए ऑफ एन माइनस वन है लेस देन एन। अब ए ऑफ एन माइनस वन अगर लेस देन एन आ जाता है तो क्या होगा? एक तो पहले बात ये बकवास हटाते हैं, चल ये हटा वैसे, ऑब्वियसली वो वाली चीज़ कहाँ गई है डॉक्टर्स, ये तो भी काम आ जाएगा। एक अब ये हटा दे, ये हटा दे, ठीक है। अब एक एल एल काउंटर चला ले, काउंटर और जीरो, दिस विल काउंट द नंबर ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज, ठीक है। अब यहाँ पे तेरे दो केस आ जाते हैं, इफ तेरा काउंट बराबर जीरो आता है, एल्स में तेरा काउंट बराबर वन आता है, एंड यहाँ पे कॉवेल ले ले, कॉमा एम एक्स बराबर माइनस वन, मैक्स ऑफ ए ऑफ आई कॉमा एम एक्स, राइट। इंडेक्स कौन नोट करेगा भाई? इंडेक्स यू कैन एक्चुअली टेक एनी वैल्यू, डजंट रियली मैटर, यू हैव टू टेक द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि हमें हमें ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा करनी है नहीं इसके अंदर। या सो लेट्स नॉट टेक द मैक्सिमम वैल्यू, पॉइंट नहीं है मैक्सिमम वैल्यू लेने का। Let's just make a mx index, okay. सी हाँ जी यार, mx नाम रखे से नाम देकर तो mx से मैं कभी इंडेक्स सोच नहीं पाता। Ind is equal to index, right? Right, we got this. We got the indexes part, we got this. Everything seems very much sorted. Or we can actually do this in the over here to save some space, I guess you can say. क्योंकि अगर बाहर हुआ तो यहाँ से बाहर भी जाएगा, सब पे रन नहीं होगा। वेरी बहुत ही बकवास चीज़ सोचता हूँ, बट कोई बात नहीं। अब चल काउंट के लिए जीरो आ गई, काउंट के लिए जीरो नहीं है, पहले पॉजिटिव वाले केस चलते हैं, जो इंडेक्स आया तो उसको 500 करना पड़ेगा, ठीक है। 5, 5 × 20, 5 40, 45 इज द मैक्सिमम इट विल टेक, ठीक है। अब देख, यू डोंट हैव टू इवन डू एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू गो फॉर लाइक दिस। देख अब देख हम इस पे जाएंगे, आई विल नॉट, एक बस सिंपल सिंपल हो चल रहा है, फॉर एल एल सी बराबर जीरो, एल एल आई बराबर जीरो, आई लेस देन, मतलब मैं 5 लेना चाह रहा हूँ, आई लेस देन जीरो, I less than 5, and I plus plus, nothing more, nothing less, and I'm just going to count 5 values. That will be index and index, that's it, right, and a slash in, ठीक है। अब आ रहा था डिकोडिंग, आ रहा था डिकोडिंग ठीक है, ये हो गया, हमें सारी वैल्यूज मिल गई। इफ आई नॉट इक्वल टू इंडेक्स, क्योंकि इंडेक्स को हम फिर से चेंज नहीं करना चाहिए। Actually, it doesn't really matter. Okay, it doesn't matter, but okay, we'll just go with it. And what we'll do is, if तेरा, इसको पहले वन कर, if तेरा a of I is less than a of I minus वन, तो तू क्या करेगा? काउंट, तो सब में दो दो बार भी काउंट कर देगा तो हो जाएगा क्या? Let's just do it as well, I guess so.
ठीक है। और आउट हम कर देते हैं आई स्पेस इंडेक्स स्लैश एन, राइट। यप, एक्शन दो बार ही होगा आई गेस। ओके, लेट्स ट्राई इट फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज। अब इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कुछ वो है नहीं, एंड बी वाज नॉट डिक्लेयर्ड, सॉरी। या दिस विल वर्क फॉर बेसिक वर्क्स, बेसिक चीज़ों में चल जाएगा ये। ओ व्हाट द हेल ब्रो, ये क्या चीज़ है? Yeah, there's no problem. What is the total number it will take? And you cannot store all of this in your operations because, yeah, I think it should take out 5 plus 2 into n minus 1. I have, okay, I'm going to do something very stupid, I guess. And, okay, एक second. I just want to check the tutorial. क्या इन्होंने भी ऐसा करा हुआ? Because I haven't read the last part of the tutorial. Okay, this is not even the question that I was doing. This is also the question I was doing. Okay, damn, that is smart. I यहाँ पे कर, यहाँ पे I प्लस वन कर, यहाँ पे भी I प्लस वन कर, और यहाँ पे भी इंडेक्स प्लस वन कर, एंड देन यहाँ पे भी इंडेक्स प्लस वन कर, एंड यहाँ पे भी इंडेक्स प्लस वन कर। तब तो 5 ये वाली, और एक हर बार इसमें 2 बार ही चलेगा। हर उसमें 2 बार चलेगी जी, ठीक है। हर वैल्यू के लिए एक्सेप्ट वन, राइट, एक्सेप्ट वन, हर उसमें 2 बार चलेगा। तो इट इज 5 इंटू एन माइनस वन इंटू टू, राइट। यप, दिस इज व्हेन इट्स पॉजिटिव। अब जब ये पॉजिटिव नहीं है तो क्या करेंगे? पॉजिटिव नहीं है तो सोचना पड़ेगा। लेट्स सी हाउ इट रन्स फर्स्ट। पहली बारी में 7 11 11 में आई कैन नॉट चेक ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं है तो क्या। तो हम उसको बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू बना लेंगे, और उसको उससे बड़ी नेगेटिव वैल्यू बना लेंगे। सेम चीज़ अगर हम उल्टा करें तो भी चल जाएगा ना। लाइक अगर हम ए ऑफ एन माइनस वन को नेगेटिव बना लेते बहुत ज़्यादा। ओके, एन माइनस वन। ओके, लेट्स जस्ट डू इट लाइक दिस। मैंने बहुत छोटा कर लिया। Actually, I did it a little wrong.
See, I don't have what it takes to check it again and again and again, so I'm going to put it over there. Let's hope for the best. Yeah, I was having this question and blah, 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 blah. Just had a very bad streak. Oh, I accepted. Okay, nice question. At least got it respected. And अब हम करेंगे कुछ और क्योंकि मेरा हो गया इस क्वेश्चन से. There's a lot of questions that goes around DP or greed. Usually, math, most questions are greedy or here at this point. Yeah. So I'm thinking that I'm doing something wrong. What if I go to Yusaku and start solving something over there? Yeah, I hope. Okay, I have to log in, but they have a roadmap, right? Day two food, I don't know what it is. Um, Sections, we go to general. But if I follow this roadmap, will I be able to solve good questions? Because I don't think I am able to solve good questions. I think I should solve ad hoc problems. थोड़े ad hoc problems करने चाहिए मुझे. I should solve a lot more questions than I actually do right now. What if I solve all the questions in this? I think it will help me a lot. Can I pause the stream for a while? Okay, I just need to do a login. That's fine. Mm, I just need to check it once कि हट गया नहीं हटा. ऐसा ना होना नहीं मेरे को नहीं दिख रहा सिर्फ और फिर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है. I cannot show my accounts. Yeah. Okay. So it is a vaccine. Let's check it once कि हट गया नहीं हटा. ऐसा ना होना नहीं मेरे को दिख रहा सिर्फ और फिर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है. I cannot show my accounts. Yeah. So it is a vaccine. Let's check it once कि हट गया. ऐसा ना होना नहीं मेरे को दिख रहा सिर्फ और फिर ज़्यादा दिक्कत हो सकती है. Show my accounts. Mm-hmm. So it is a vaccine. Okay. चलो ठीक है हो गया. um, Back now. मैंने इसके अंदर अपना लॉगिन कर लिया अकाउंट एंड अब हम क्वेश्चंस करते हैं. Let's go to problems. There are different problems. Okay, I've never seen that. Resources. I need. Okay, there's a lot of things. What is this? I've never seen it. This is Yusaku IDE. Okay, this is an IDE guide. Okay, I don't really want IDE guide. An online MDs for writing and premium context. Participate in high quality programming contest towards 3 college students. Okay, workshops, excel workshop providing everything you need to know about Yusaku clubs, competitive programming classes. Oh yeah, there's another one classes. I've never seen that. Damn, why? Okay, let's leave this. What is groups? I'm to a group. Okay, I was already for that. White tags, show tags, okay, sections. Okay, people talk about Yusaku roadmap. Yusaku roadmap. What is that? Hmm. Is it that? No, I think I've read this already. Okay, damn, bro. Yusaku, right? I think engaging. Okay. I was studying out a little about Yusaku.
चल छोड़ो. There's no point in doing this. Let's just go and solve a little questions over here. Let's go to section. Let's go to bronze. Okay. Yeah. Now, time complexity is something that I am obviously fairly good at because it's been a while. I haven't solved this dynamic array. I was reading it. It was really interesting to read. Memory allocation. If we solve this, and I don't know what is we do this number of elements and some size निकालेंगे. Windows से कौन सा? Yeah, obviously I can solve this. I'm not a stupid kid anymore. Simulation. Simulation are just questions जिसके अंदर आपको yeah I have solved this right. Yep, solved this one. These are just questions जिसके अंदर आपको वो करना पड़ता है. It's just a simple simulation. आपको simulation पूरी run करनी होती है. That is simple type of questions. So complete basic complete search. Basic complete search is just in many performs yeah complete search with recursions. I've not solved this and I'm not going to. Introduce sorting. There's different types of sort. Bubble sort, sort. There's a I guess this is a question, right? Okay, fucking leave IDs. एक second. I hate this. Zero लोग देख रहे हैं ऐसा. बट स्टिल क्या बताए कभी कोई देखने अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी ईमेल आईडी समझ ली. Yep. Submit code. What the hell is this? I guess this is a problem. Okay, but I'm not going to do vowel sort or anything, right? Yep. I'm not going to do vowel sort and all that. Dynamic array, la 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 la. This is also good stuff, but okay, I've solved questions on this. Two sum of two variables. Why do I have to log in every one of these? No. Yeah, let's go with greedy. I think I like greedy rounds a lot. This is bronze, right? Bronze है उसका senior dog है थोड़ा सा rectangle geometry and dog problem बहुत आती है. This is somewhat frequent greedy algorithms. But let's just go with ad hoc problem. I don't know what is ad hoc problem are. I have no idea. Let's do it reading. Yeah. I have more clothing than reading right now. Okay. Here are some general tips that may be useful in approaching problems that appear to be ad hoc. Draw a lot of small cases, gain better understanding of the problem. If you have trouble drawing debugging, draw more cases. If you don't know how to start with the problem, draw more cases. And if you don't know how to do it, you're further missing an important observation. So draw more cases and make observation on the element. Okay, ad hoc is just different problem that requires a lot of observation. Just regard unless you see the entire solution. Okay, try to. Okay, is like the tag that you were getting right now in this. What was it? I forgot. The constructive algorithm. Constructive algorithm same as this. There's nothing much about it. Don't get stuck on it and try approaching the problem from a lot of different perspectives. Try to mess around with the formulas or draw a visual de depiction of depiction of the problem. One of the okay. Let's do a dog problem. Yeah, इसके अंदर कभी भी login होता ही नहीं है for some reason. Okay, but still, let's solve the problem first. Okay, इसके अंदर standard input output भी आना पड़ता है और मेरे पास अब वो भी नहीं रहा इसके अंदर so fuck that is a problem. Can I save this? Also save भी करता हूँ save तो control इस करता है. So what किस नाम से आता है? सही तो वेब पेज सेव कर रहा है ना इसको मैं ये नहीं चाहिए. उसके अंदर चल फाइल ही बना लूँगा. ये क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन.
in what photo, in what seems to be a familiar occurrence, Farmer John lines up, साला फिर से Farmer John lines up his n cows conveniently from number 1 to n for a photograph. Initially, the cows are lined up in the order 1 say n. From left to right, farm goal is to line up cow in the order B 1 say n. From left to right. Series of modifications in the order. Each modification consists of choosing a single move to some position to the left. Please count the minimum number of modifications required to line up. Okay. If they're already the same, it doesn't matter. But if it isn't, then what? Okay. इसका क्या करता है जो उसकी पोजीशन है जैसे 5 की पोजीशन 2 की पोजीशन is 1 to the left right जिसकी पोजीशन उसके राइट वाले से जितना ज़्यादा का डिफरेंस हो that is the maximum number of movies it will take. Hmm. Yep, I think that is the basic crux of that question. See, that is just observation, and every observation, right? Okay, so okay, we were at okay, no, that's fine. So overview again. Okay, I can do it. 1 second. चल अभी बाद में करते हैं. Oh fuck. Yep, बेटा. हाँ, तो उस आ जाते हैं. हम्म, हमने एक इनपुट ले लिया. हमने एक और इनपुट ले लिया 2 इनपुट्स ले लिए राइट वी हैव टेकन 2 इनपुट्स अब हम क्या करेंगे एक बार इनको कंपेयर कर लेते हैं तो उसका राइट वाला डिफरेंस वही निकालना है ना मतलब पी आई इज ग्रेटर देन दिस राइट देयर इज अ वेरी डिफरेंट वेरी वियर्ड वे ऑफ डूइंग इट राइट ओके दैट आई हैव थॉट ऑफ कॉमा आंसर ऑफ n करके निकालूंगा मैं इसको नाउ व्हाट विल डू इज okay we are going to do both of them simultaneously we're going to do is answer of a of I में हम प्लस इज इक्वल टू ए ऑफ आई कर देंगे एंड आंसर ऑफ पी ऑफ आई में हम माइनस इज इक्वल सॉरी हम आई प्लस 1 कर देंगे हम हर उस वैल्यू से जो उसका इंडेक्स है उसको माइनस कर रहे हैं और उस वाले को इंक्रीज कर रहे हैं अगर ये वैल्यू बी आई और इसकी पॉजिटिव आती है तो मतलब बी आई तरह बड़ा है ए आई से मतलब वो राइट में शिफ्ट होना चाहिए था अगर वो छोटी आती है तो मतलब लेफ्ट में शिफ्ट होना चाहिए था अगर जो भी मतलब ग्रेटेस्ट पॉजिटिव वैल्यू आती है वो तो cancel it like star max underscore element all of a answer right this will give you the answer technically okay now I have to shut it down for a while I mean ये okay I got my ID let's log in this is my user ID what is my password okay
Mm, ओके या सो लॉगिन हो चुका है बट अभी बस ये देखना है कि मैं इसके अंदर फाइल कैसे वो करूँगा क्योंकि आई डोंट हैव अ Sublime is not working anymore so yeah Sublime इंस्टॉल तो नहीं करूँगा मैं अभी बैठ के इसको हटा देता हूँ मैं सही ठीक है जरूरत नहीं है I can make anything right 5 4 3 1 2 1 it will take maximum 4 turns right 2 एक बारी में ये एक बारी में ये really damn how did it do it better than I thought it will how did you right answer that even I wasn't thinking this was right what the hell bro this should be 4 minus 1 like obviously 5 minus 1 right 5 minus 1 should be 4 I don't know why it isn't working but the correct answer is actually 2 1 for here I have no idea how it is in 2 what is the answer पहले का आंसर है इसका तो अगर 5 को लेफ्ट शिफ्ट मारता है ज़्यादा अगर तो 4 को लेफ्ट शिफ्ट मारता है like एक सेकंड आई हैव डाउट ओके जब तो 5 करेगा तो सब कुछ एक ही के तरह हो जाएगा दिस इज नॉट पॉसिबल राइट इसमें पॉसिबल ही कैसे है अगर तू बिकॉज यू कैन नॉट मेक इट वन गो टू द लेफ्ट टॉप obviously it is not possible to make it go left that is the problem this is not a possible case right यहाँ पे written over that it is always possible let's try this one okay इसका आंसर पता है 4 why bro why okay that is the galti a of I minus 1 a of n minus 1 that is the error that I was getting 4 राइट शिफ्ट करना है तो नेगेटिव वैल्यू होगी ना कि लेफ्ट शिफ्ट करने पर नेगेटिव वैल्यू होगी राइट शिफ्ट इज द नेगेटिव वैल्यू यार I don't like using that
No, I'm getting two right. Hmm. But I really need to put it in a. This is anything I can download it. No. Oh, yeah, I was gonna go a while back. Okay, what if I go a main dot cpp file? Oh, yeah, I can just make a file, right? I don't really have to being able to run it. And I really need to know about its names, right? Okay, I don't remember. Okay, file hand file Yusako input. Yeah, yeah. Yeah, I do have stream. If stream actually free open this box. What is the problem name here? What it set terminal but terminal. Yes. Mm, it's set. मैंने फाइल थी मेरी पे. Let's see if it is even getting something right. Okay. Your output returned to standout. Incorrect answer to sample disk is 0. There is some problem. Yeah, they will give you a better idea. If in if even works actually. But is terminal the right name? What is the how will it go? Example to study out incorrect answers on sample cases below. I don't get it. Arrives from terminal slash. I don't know. This is the first time since terminal slash again. Mm, Usually it's the arrives on terminal T capital T small. This could be the issue.
Another language here. Okay, there's some problem. Okay, we are going to something for this. Okay. Yeah, ऐसी जगह confusion है. I don't think it will take a lot of time and it will take a lot of time and effort to do all this shit. Yeah, I don't really give too much time over stuff like this. Okay, this is a waste of time. No, it is just a waste of time. अब मेरे को इनपुट आउटपुट लेना नहीं आता इसलिए मैं क्या करूँ बहुत टाइम हो जाता है क्वेश्चन करो उसमें तो या let's try, let's see. Oh fuck. वो तो ठीक है. What? अच्छा okay, there is a front is better. I'm sorry. Let's see if this works. Okay. Okay. Okay, I just got wrong on what 1 2 3 4 5 6. वाह 14 से 6 हो रहा था. Okay, एक second, I just have to. Just a second. I got a very message from a club, and yeah, I just have to reply to it. Can I just? Okay, sorry. Hmm. Okay. Okay. So my logic was correct. I mean, very wrong. Why was it wrong? Okay, just go over the example जो हमने पहले करा था यहाँ पे. 5 4 3 2 1, right? पहली बात इसके ना कितने बार लगे? एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए यही रहेगा. It has a maximum of 4, right? No. एक दो. The three remain same. It will actually take 4 turns. Okay, so what is my code failing on and why cannot I think anything here? Okay, 7 से 10 वाले के अंदर. ओके, पहले तो मैं छोटे टेस्ट केस में फेल हो रहा है.
तो इसका मतलब है कि मेरा लॉजिक भी गलत है। 7 से 10 में भी फेल कर रहा है, तो मतलब मेरा उसके अंदर भी थोड़ा लॉजिक है, तो उसके कारण में फेल नहीं है, तो वो भी गलत है। लेकिन हर जगह हर टॉपिक के अंदर 2 डिसीजन तो फेल करिए। नाउ द प्रॉब्लम है कि मुझे आता नहीं है कुछ। It's a dog, yeah. A dog that doesn't even require anything, any topic to know what to do. Okay. I guess you can try writing a lot of solutions. मेरा दिमाग क्यों नहीं चल रहा आजकल? What is wrong with me? हाँ, okay. क्या कर सकते हैं? Let's go for writing it. That is just किसी ने लिखा है कि you have to do it 5 times, right? कोई और टेस्ट केस लिख लेते हैं। एक बार इसका सेकंड वाला टेस्ट केस को ही थोड़ा और एक बार लिख के देखूंगा, ताकि जस्ट थिंक में लॉजिक में तो कोई एरर नहीं है। See, what if I'm getting right? Okay, अगर 4 का आगे मैं करूँगा तो it will be 4, 5, 1, 3. What if it was like this? 5, 2, 1, 3, 4. इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कौन होता है बीच? I don't think कि अच्छा है, ऐसा तो बता दो। Oh, I'm tired of all this shit यार। Analysis mode में कुछ। Okay, I'm tired now. ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूँगा आराम से बैठ के, और अभी के लिए मेरा हो चुका है, मैं सोऊंगा थोड़ी देर। Oh, we have the solution here. Are they simulating it? Yeah. Less is equal to 0, j is equal to 0. Hmm. No idea. Okay, no, no, so how do we don't really have to think alike, we can think on our own. Okay, so I will cut the stream here right now. आज एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था हमने, तो या धीरे धीरे और करेंगे।